He would not know it, but we can, if you want, we can ask the government of Pakistan, and they can, if they have some information, then I'm sure the Attorney General. That would be really kind of you, my lord. But for this petition is also about. उन पे भी आते हैं ना पहले आपका पर्सनल कंसर्न तो हो जाए ना, वो तो फिर बात की बात है. Can we have a report if there is some information? My lord, I have taken down the details. And if whatever has happened, all she says is, if I can know the truth of the matter. Yes. And I don't see why this government or those in charge of various institutions will want to assume responsibility if someone else earlier had done something illegal. There's no reason why they won't want to, and there's every reason that if they have some information, they will tell you. So can you sort of, we'll pass an order, but unless you want to add something. My lord, ये भी देख लीजिएगा जी साहब, अगर there is an opportunity or option of constituting second GIT, अगर GIT में होगा तो उसमें कई लोग होते हैं. GIT में क्या है वो देखें, वो GIT देखते हैं, इनको कम से कम जवाब दे देंगे. वो एक खाना पूरी हो जाएगी, कुछ उसका इफेक्ट नहीं होगा. उसमें my lord कुछ भी नहीं होगा. Because she's gone through the process. Yeah. Now, if it can be once again done with a fresh pair of eyes, and we're not casting any aspersions on those presently there, but we have confidence if there is, whatever, let the truth be told. Even if something has been done wrongly, let it be disclosed. My lord, तो ये जरा आप देखें that she has been in the forefront, not only for her own husband but for others also. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे वगैरह के लोग होते हैं वो अभी बता देंगे. तो हमारे समाज वालों से जो कभी चाहिए जा जाएगा, डिफेंस करेगा. ठीक है. So the concerned ministries would be Ministry of Interior and Ministry of Defence. My lord. These are or any other? It's Ministry of Interior essentially. And or Ministry of Defence. Because she says she's alleging it against Pervez Musharraf. So that comes Ministry of Defence. He was president at that time. Ministry of Defence. Chief of Army Staff as well. So yes, Ministry of Defence. So let it be taken seriously, and we expect that if it can be resolved. My lord, we will furnish the report. For instance, in Argentina, a lot of people had disappeared, and the new government came and absolved itself. They said, "उन्होंने किया था, बता दिया." तो वो कम से कम तसल्ली तो हो जाती है ना लोगों को कि पता तो हमें चल गया. So otherwise, there's a question mark hanging all through, forever and ever. So, my lord, if I heard Ms. Janjua correctly, she mentioned that her father-in-law did meet General Musharraf at that time. Yes. And then he said, okay, we have no interest in him. Said, right. So she said so. You've heard it correctly. So still, a person may still not tell the truth. So I will furnish report on that. A lot of time has now elapsed, 18 years. She's entitled to know the truth, if nothing more than just the truth. ठीक है? My lord, I have noted. अच्छा, अब बाकियों का केस बताइए आप. My lord, ये जो फर्स्ट तो यही है कि ये बताइए कि मिसिंग पर्सन्स के जो आप तो काफी इससे मुंसलिक रही हैं. जी जी. ये सबसे ज्यादा कब हुए थे मिसिंग पर्सन्स? ये परवेज मुशर्रफ के दौर में ज़्यादा हुए थे, और फिर उसके बाद कंसेक्टिवली जब ये पीपल्स पार्टी का दौर आया तो ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई बल्कि चलती रही. सिमिलरली इन PMLN, BTI एंड देन कोलिशन गवर्नमेंट एंड देन केयर टेकर. तो थ्रू आउट द हिस्ट्री जब से 9/11 से लेके आज तक ग्राफ ऊपर नीचे तो होता रहा है. आजकल भी ये बात हो रही है? जी सर, हो रहा है, आजकल भी हो रहा है. आप एक सेकंड ठहरिए ना, इनको बात करने में. जी
बताइए। जी सर, आजकल भी हो रहा है ये केसेस आ रहे हैं, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस हो रही है। नहीं, जैसे शोएब साहिब साहब कहते हैं ना, किसी को उठाया फिर छोड़ दिया, वो वाले केसेस हम नहीं बात कर रहे हैं। हम वो वाले बात कर रहे हैं जिनको छोड़ा नहीं है, जो मिसिंग पर्सन्स हैं। जी जी, ये तो मिसिंग में नहीं रहे ना, ये उसमें आ गए, दस्तयाब हो गए, खुद आ गए, दस्तयाब हो गए, जो बात है वो एक अलग इशू है। हमारा जो जुरिसडिक्शन है वो हेबियस कॉर्पस की जुरिसडिक्शन है। व्हेन अ पर्सन कम्स बैक, हेबियस कॉर्पस जुरिसडिक्शन एंड्स, देन जुरिसडिक्शन बिकम्स क्रिमिनल और सिविल। ठीक है, हेबियस कॉर्पस की जुरिसडिक्शन लिमिटेड होती है, प्रोड्यूस द पर्सन। ठीक है, दैट इज जुरिसडिक्शन इज वेस्टेड इन द हाई कोर्ट्स एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट। तो अब हमें बताएं, देयर आर मिसिंग पर्सन्स हु आर टुडे बीन पिक्ड अप एंड आर स्टिल मिसिंग। ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ आपको पता है या नहीं पता है? जी सर, हो रही हैं इस तरह से। नाम है कि लोगों के वो किधर हैं? माय लॉर्ड, क्योंकि लोग जनरली बात करते हैं, जब हम स्पेसिफिक्स में जाते हैं ना, पूछते हैं कि भाई नाम बताओ, तो नेचुरली सरकार से हम पूछेंगे तो भाई फला मोहम्मद इदरीस कहाँ है, वल्द फला फला, तो वो फिर हमें जवाब देंगे ना। अगर हम एक जनरल बात कहेंगे, वो क्या जवाब देंगे हमें? लॉर्ड, इसीलिए मैं चाह रही थी कि ये कोर्ट, क्योंकि हमारी इसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता रही हैं और तकरीबन 18 में से 15 साल मैं यहीं पर पेश होती रही हूँ। और इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए अब हर चीज़ें दौर बदलते जाते हैं ना। जी, कुछ लोग मिसिंग पर्सन आज भी, मगर वो उठाए गए हैं, आपने कहा 2005 में या 2002 में, ठीक है, तो वो यकीनन इस हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं ठहरेगी ना। तो फिर भी अगर आज ये गलत काम कर रहे हैं तो हम उनको रोक सकते हैं। दो बातें हो गई, देखिए इसको जरा सा क्लैरिफाई कर लें। हमने पहले भी ये बात की थी कि अगर हमें टाइम नाम दे दें और पीरियड्स दे दें ना, तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो हो गए पुराने मिसिंग पर्सन्स, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि उनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं जी। एक दूसरा है कि ये चीज को रोका जाए, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। एक है उनको दस्तयाब करवाया जाए, वो अलग हम जरा उसको करना चाहते हैं, लॉजिकली चलना चाह रहे हैं। तो हम कम से कम पुराना तो नहीं मसला हल कर सकें शायद, अगर आज वाला तो हम कर सकते हैं ना, रुकवा तो देना सारी बातों को, मिसिंग पर्सन को रुकवा दें। बिल्कुल सर, मैं यही चाहती हूँ कि आप जब इसकी कॉग्निजेंस लेंगे तो इसकी पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन होगी कि क्या ये स्टेट तो की पॉलिसी आज ही हम इनको हुक्म देते हैं कि भाई पॉलिसी रोक दी जाए, कि लोगों को उठाना कम से कम लिस्ट स्टॉप हो जाए, तो फिर हमारे पास सिर्फ पिछले ही रह जाएंगे जिनको रिकवर करना होगा। Are you prepared to make a statement on behalf of the federal government that you will not pick up anyone illegally without due process of law? Absolutely, sir. I mean, this is a statement which is in accordance. If you give the statement today and then something happens tomorrow, then consequences will follow. You have to very carefully make the statement. I know this is a statement of law, and but we take some instructions. We want it in writing. All right. Now, who will give the statement? My Lord, Secretary, Ministry of Interior. It should not be a section officer. No, it is. We want the highest level of people giving the statement. I think it's Secretary Interior for one, and the other could be. We want this on behalf of the government of Pakistan. So then I think not on his own behalf. Naturally, he may be retired tomorrow, transferred tomorrow, so we can't hold him responsible. But it will be responsibility of the government of Pakistan. And I think this country has fractured from within, and part of it is derailment of democracy, and that is a major cause. In Balochistan, missing persons are a separate issue. In Khyber Pakhtunkhwa, it's slightly different. In other provinces, it may be different. I am personally well conversant with Balochistan, so there is a different thing. And then there's also a very horrible other element. People are being killed for ethnicity. People are being killed for sectarian reasons. I have come across horrific cases.